Hello friends. So after completing our 7 point in the 7.7 exercise question number 1, 2 and I think 9, 10 about 3 new formulas. Okay, you know very well about the under root x square plus a square, under root x square minus a square and under root a square minus x square. Okay, chalo. So 1, 2, 9, 10 these 4 sums about formula practice. You make the coefficient of x square 1 and then put the formula and get the answer. Okay? चलो याद करो तो जो 1 अपॉन एंड ऐसी कोई भी फॉर्मूला थी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप 7 फॉर्मूला, तो वो जितनी भी फॉर्मूला थी 7 फॉर्मूला एंड वो जो एक्सरसाइज थी हमारी कि टोटली सम्स अबाउट फॉर्मूला प्रैक्टिस एंड देन परफेक्ट स्क्वायर मेथड 7.4 आई थिंक. बराबर 7.4 में क्या था? In the 7.4 there are two types of sums. One type perfect square only. Okay, downside this type of equation means perfect square. बराबर? तो same here. Now make the perfect square upside in the numerator. Make the perfect square upside. Same pattern upside make the perfect square and use the formula. जो आप 7.4 में करते थे डाउन साइड में, now upside formula under root x square plus a square formula. Okay, चलो तो 1 and 2 over. Now 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 11 and 2 illustrations. So this 7.7 totally work over. Okay, चलो तो ये let's start our question number 3. Okay, तो हम क्या बोलते थे कि to make the perfect square first check the coefficient of x square 1 or not. Okay, here the coefficient of x square is 1. Now x square plus 4x and how to make the last term. तो this is the 4x, तो last term तो आपको याद होना चाहिए कि last term हमारा 4 होगा, बट अगर याद नहीं है तो मिडल टर्म स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 by 4 we have 6, तो 4 plus 2 dx, so equal to integration under root, and this is x plus 2 whole square and plus 2 dx. बाद में हम क्या करते थे? Taking x plus 2 equal to t. Same here. Taking x plus 2 equal to t. Derivation of x 1 dx 1 dt. Putting all data in our integration. So under root x plus 2 means t, so t square plus 2 is the square of root 2, so root 2 square and dx means dt. Okay, so this one is a t type formula, under root x square plus a square type t square plus a square formula. So use now t in place of x and same formula x square plus a square type. So about x our formula is x by 2 as it is. This is the formula number 1. X by 2 as it is plus a square by 2 log mod x plus a as it is. So now in this x means t. So t by 2 as it is. As it is means t square plus root 2 square. Root 2 square directly putting 2 plus a square. So a is a root 2 but a square is a 2. So a square by 2 log mod x plus, but here is not x, here t, so t plus as it is means t square plus root 2 square, directly putting 2 mod and plus c and over. Done. Now putting the value of t. So what is t? X plus 2, so x plus 2 by 2 under root t square means value of t whole square, x plus 2 whole square plus 2 plus 2 by 2 cancel, log mod again t is a x plus 2 plus under root x plus 2 whole square
plus 2 mod over and plus c. So how to write the final answer? So this x plus 2 by 2 as it is. Now expand this whole square and plus 2 and direct process. One by one nahi. What is the expansion? X square plus 4x plus 4 and plus 2. So x square plus 4x plus 4 plus 2, 6 plus log mod this x plus 2 as it is plus under root. Hello, same process. X square plus 4x plus 4 plus 2 plus 6 mod over and plus c. Done? Same process but formula upside. Upside formula, so this is the formula. Downside formula, so 7.4 type formula, 1 upon wali formula. Okay? So, question for mark in your homework. And मैक्सिमम सम्स होमवर्क में होंगे बिकॉज टोटली रिपीट मेथड. जो आप डाउन साइड करते थे वही आपको अप साइड करना है. बराबर 2-3 सम हम करेंगे यहाँ पर, बाकी जितने भी आपको करना है. ठीक है, चलो तो 4 मार्क इन योर होमवर्क. नेक्स्ट नंबर 5. इन दी नंबर 5 what is the problem? Coefficient of x square is 1 but x square is negative. If x square is negative so we cannot convert our term into perfect square. तो अंडर रूट भी है तो क्या करोगे? इन दी रूट माइनस साइन कॉमन. सो इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस कॉमन देन ब्रैकेट x square plus 4x and minus 1 dx. Now in the bracket making the perfect square minus bracket x square plus 4x. तो लास्ट टर्म क्या होगी आपकी? प्लस 4 बट वी हैव माइनस 1 तो प्लस 4 एंड माइनस 5. So equal to integration under root minus bracket x plus 2 whole square minus 5 dx. Now minus sign multiply. So under root 5 minus x plus 2 whole square. Hello, same. X plus 2 equal to taking t. So 1 dx equal to 1 dt. Now putting all data in our integration. So under root 5 means root 5 whole square minus x plus 2 means t and dx means dt. So this is the under root a square minus x square. Under root a square minus x square formula. Third formula, sine formula. And in the sine formula there is a plus sign. Okay. So x by 2 means t by 2 as it is. Means root 5 whole square minus t square means 5 minus t square plus a square. So root 5 square is a 5. A square by 2 sine inverse x by a, but here t by a. So t by root 5 and plus c. Okay. Now putting the value of t. So what is t? X plus 2. So x plus 2 by 2 under root 5 minus x plus 2 whole square plus 5 by 2 sine inverse t by root 5. T is x plus 2. So x plus 2 by root 5 and plus c. Okay. So final step x plus 2
by 2 under root 5 minus x plus 2 होल स्क्वायर। तो x plus 2 होल स्क्वायर यहां पर ही देख लो, आप एक्सपांड करोगे 5 minus x plus 2 होल स्क्वायर, दिस स्टेप एंड दिस स्टेप सेम, तो वी कैन राइट डायरेक्टली दिस वन 1 minus 4x minus x स्क्वायर। ओके, अदरवाइज आपको क्या करना है, एक्सपांड करो या एंड प्लस माइनस करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1 minus 4x minus x स्क्वायर प्लस 5 by 2 sin inverse x plus 2 by root 5 and plus c। ओके, चलो तो 3 4 5 ओवर। चलो फ्रेंड्स, सो 1 2 3 4 5 ओवर। नेक्स्ट नंबर 6 होमवर्क, नंबर 7 होमवर्क, नंबर 8 होमवर्क, क्वेश्चन 11 होमवर्क, आफ्टर 8 9 10 ओवर हमने कर लिया है। 11 मार्क इन योर होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 23 एंड एग्जाम्पल नंबर 24 ऑल्सो इन योर होमवर्क। कोई डाउट नहीं है एंड कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है, रिपीट सम्स है टोटली। ओके, 8 में क्या होगा, 8 इज द डायरेक्ट फॉर्मूला और मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज x स्क्वायर देन x, नो कांस्टेंट टर्म। ओके, तो वी हैव टू राइट द परफेक्ट कांस्टेंट टर्म्स। लास्ट टर्म, ओके, तो लास्ट टर्म क्या होगी आपकी x स्क्वायर प्लस 3x। लास्ट टर्म क्या होगी आपकी मिडल टर्म स्क्वायर 9 by 4 प्लस 9 by 4 एंड माइनस 9 by 4 इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट and this is x plus 3 by 2 whole square minus 9 by 4 dx। Now solve yourself and same pattern type sum। okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो up to example 24 over, it means this part in your homework, then up to 7.7 totally sums over। okay, चलो तो next 7.8, but 7.8 क्या है कि prove that integration of x is a x square by 2। बराबर, तो वो हमें एंड में करेंगे, बीच में नहीं करना है, प्रूफ टाइप सम्स। ओके, तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग 7.7 वी विल स्टार्ट डायरेक्टली 7.9। ओके, चलो नाउ अप टू 7.7, 7.8 तो डिफरेंट है, बराबर। अप टू 7.7 आपने जितने भी इंटीग्रेशन देखे, लाइक दिस इज द इंटीग्रेशन, तो दिस इज ओनली इंटीग्रेशन एंड इफ वी सोल्व अवर ओनली इंटीग्रेशन तो हमारा आंसर भी क्या होता है कि एनी आंसर एंड प्लस सी। तो दिस इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, दिस ऑल अप टू 7.7 ओनली इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। बट इन द इंटीग्रेशन देयर इज ए लिमिट, आपने फिजिक्स में देखा होगा, बराबर, अपर लिमिट लोअर लिमिट एंड क्वेश्चन। तो यहां पर आपको पर्टिकुलर कोई आंसर मिलेगा कि आंसर इज 5, आंसर इज 3, 3/2, 1/2, माइनस प्लस एनी आंसर। तो दिस लिमिट टाइप इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, चलो तो हाँ, प्रॉब्लम नहीं है कोई। हाँ, एक हैबिट रखनी है आपको कि आप यहां पर प्लस सी नहीं लिखोगे, अपर माइनस लोअर, वो हम यहां पर सम में देखेंगे। आपको लिमिट पुटअप करनी होगी एक्स में, अपर लिमिट आंसर माइनस लोअर लिमिट आंसर, देन मिक्स, तो कोई आंसर मिलेगा आपको। तो इन दी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन मस्ट रिमेंबर डू नॉट राइट प्लस सी एट लास्ट। ओके, चलो तो let's start our exercise 7.9 question number 1। first sum is a minus, how to speak this integration, minus 1 to plus 1 x plus 1 dx। so first solving the integration, so integration of x is a x square by 2 plus integration of 1 is a x or n square bracket and write here limit minus 1 to plus 1। now putting the limit upper minus lower, first put the upper limit, all x equal to put the upper limit, after completing
after putting the upper limit equal to upper limit equal to 1, then put the lower limit. But upper limit, fully bracket, then minus, and then lower limit. So upper limit is 1. So put all x equal to 1, every x equal to 1. So putting 1 in this bracket, x equal to 1, so 1 by 2 and 1 upper limit, then minus fix, and now in the bracket same put the lower limit. So putting minus 1, so minus 1 square is a plus 1, and putting here minus 1, so minus 1, or minus sign multiply, 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 plus 1, 1 by 2 cancel, and 1 plus 1 is a 2. Done? Your next number 2. 2 to 3, 1 by x dx. So integration of 1 by x is log mod x, and limit is 2 to 3. Now upper limit minus lower limit, so putting 3, so log 3. Now we cannot write log mod 3. 3 is a positive, so log 3. Upper limit over minus lower limit, so putting 2, so log 2. Log 3 minus log 2, in the log there is a subtraction, so division, log 3 by 2. Done? So this is our question number 2. Next, question number 3. 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9 and 1 to 2. So first integration. So integration is 4 x power 4 by 4 minus 5 as it is, and x cube by 3 plus 6 x square by 2 and plus 9x 1 to 2. Okay. Now here 4 cut. So x power 4, this term as it is, 5x cube by 3, 6x square by 2, 3x square, and plus 9x 1 to 2 limit. Okay, now upper minus lower, this is the bracket, putting 2, so 2 power 4, 16 minus 2 cube 8, 8 5 are 40, 40 by 3, 2 square 4, 4 3 are 12, and 9 into 2 18, minus lower limit. Or putting 1, so 1 power 4 is a 1, here 1, so 5 by 3, here 1 to 3, and here 1 to 9, so plus 3 plus 9. Okay. 18 plus 12, 30. 30 plus 16, 46. So 46 minus 40 by 3. 9 plus 3, 12. Plus 1, 13. 13 minus 5 by 3 and minus multiply. So 13 is a positive but minus multiply, so minus 13. And 5 by 3 negative and minus multiply, so plus 5 by 3 equal to 46 minus 13, 33. 33. And in these two terms, 3 LCM. So minus 40 plus 5 minus 35 by 3. Okay. Here two terms, 3 LCM. Barabar, 3 LCM, so minus 40 plus 5 minus 35 by 3. Now 3 LCM. So 33 into 3, 99. 99 minus 35. 99 minus 35. So 99 minus 5, 94. 94 minus 30, 84, 74, 64 by 3. 64 by 3 is the answer. बराबर, आपको जो भी स्टेप्स है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है, 1 by 1 लिखना है.
चलो नंबर 4 0 to pi by 4 sin 2x dx. ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस एंगल 2x, so downside 2 and 0 to pi by 4. Now minus 1 by 2 outside, and in this bracket there is a cos 2x and 0 to pi by 4. Constant term take every time outside. Now minus 1 by 2 and in the bracket upper minus lower. Upper limit is pi by 4. X equal to putting pi by 4. Do not put 2x equal to pi by 4. X equal to pi by 4. So cos 2 into pi by 4. 2 into pi by 4. So 2 2 means pi by 2. Minus cos and putting 0. So cos 0. So minus 1 by 2. Cos pi by 2 is a 0 and cos 0 is a 1. So minus 1 by 2 into minus 1 equal to plus 1 by 2. रेडी? चलो तो ना 7.94 समझो. ओके, बाद में क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 0 to pi by 2 cos 2x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos इज ए sin 2x by 2 and limit 0 to pi by 2, 1 by 2 outside, so in the bracket only sin 2x and 0 to pi by 2. Now upper minus lower, so 1 by 2 this bracket sin, putting here pi by 2 तो 2 to cut and only pi, minus putting 0 तो sin 0. Okay, so 1 by 2 bracket sin pi is a 0, sin 0 also 0, 0 minus 0 0 and 0 into 1 by 2 also 0. Done. So next question number 6 e raised to x. Integration is e raised to x and limit 4 to 5. Upper limit is 5. So e raised to 5 minus e raised to 4. Okay, so this is the answer. Otherwise e raised to 4 common. So bracket e minus 1. Okay. चलो तो this is your number 6. Next 7. Integration of 10 log mod sec 0 to pi by 4. Now direct process. Putting pi by 4 and directly answer him. So log sec pi by 4. Sec pi by 4 is a root 2. Minus log sec 0. Cos 0 is 1. So sec 0 also 1. So the answer is a log root 2 and log 1 is 0. So answer is log root 2. Done. So next cosec x integration log mod cosec minus cot and pi by 6 to pi by 4. Upper limit pi by 4 log. This is the answer of only upper limit. Okay. So log upper limit is a pi by 4, putting pi by 4. So cosec pi by 4 root 2 minus cot pi by 4 is a 1. Upper limit over minus and now lower limit. So log and here putting the pi by 6. So cosec pi by 6 don't know. So sin pi by 6 1 by 2. So cosec pi by 6 2 minus cot pi by 6 root 3. Now apply the one rule. Log and subtraction, so division root 2 minus 1 upon 2 minus root 3. Okay, so this is your number 8. Okay, what about number 9? 1 upon under root 1 minus x square. Upside 1 and downside square means formula. So 1 upon under root 1 minus x square means a square minus x square. Under root a square minus x square downside. Okay, the formula is sin inverse x by a
A is 1, so sine inverse x, and limit 0 to 1. So sine inverse 1 minus sine inverse 0. Sine inverse 1 means pi by 2 and sine inverse 0 means 0. So answer is pi by 2. Done. In this 1 upon 1 plus x square means x square plus a square. 1 upon x square plus a square formula. A is 1. So 1 by a tan inverse x by a. A is 1, so 1 by 1 is a 1. Tan inverse x by 1, so only answer is tan inverse x. And limit 0 to 1. So tan inverse 1 minus tan inverse 0. Tan inverse 1 means pi by 4 and tan inverse 0 means 0. So answer is pi by 4. Done? So number 11. 2 to 3. 1 upon x square minus 1. 1 upon an x square minus 1. So formula x square minus a square. 1 by 2a. Log mod x minus a upon x plus a. Here a is 1. So 1 by 2a means 1 by 2 log mod x minus 1 upon x plus 1. And 1 by 2 taking common outside, and here limit only for the x term 2 to 3. Now putting 3, but totally process 1 by 2 into upper minus lower. So 1 by 2 log and bracket. Putting 3, so 3 minus 1 2. And here 3, so 3 plus 1 4. Minus, now putting 2, so 2 minus 1 1. And 2 plus 1 3. Okay, so 1 by 2 bracket log 2 by 4 is a 1 by 2, and minus this 1 by 3 as it is. Log and subtraction, so division. 1 by 2 upon 1 by 3. Okay, so answer is 1 by 2 log and 3 upside. So 1 by 2 log 3 by 2. Okay, so up to 11 over. Okay, so next, starting with the 12 in our next part. Next, number 12. So how to find the integration of cos square? This is a cos square. आपको परफेक्टली पता है कि आपने 7.1, 7.2 में हमने ये देखे थे, ठीक है? Cos raised to 2 power, 3 power, 4 power. 2 power तो even power, then remove the square formula. Okay, so cos square 1, first putting the only formula. So 0 to pi by 2, and cos square, so 1 plus cos angle double whole divide 2 dx. 1 by 2 outside, and integration. Integration of 1 is a x, cos is a sine, angle 2x by 2, and 0 to pi by 2. Now in the bracket process upper minus lower. So 1 by 2 upper limit pi by 2. So x is only pi by 2 plus. Now here pi by 2. First putting the pi by 2, so pi by 2 plus, and here pi by 2, so 2 cut and sine pi 2. But एक काम करते हैं, we know that direct putting the value. Here pi by 2, so 2 cut and sine pi is 0. And by 2 minus, now lower limit, so here 0 plus, and here putting 0, so sine 0 also 0. So 1 by 2 bracket, this is 0, this all 0, so only pi by 2 left. Now the answer is pi by 4. Done? So this is number 12. Now 13. In the question 13, what is the process? Upside x, downside x square plus 1. Formula? No. There is a no 1 in the numerator. There is a x in the numerator.
तो x² and x combination, then function and derivation taking t. तो in this sum, जो थोड़ी यहां पर न्यू प्रोसेस भी है, taking x² equal to t, तो डेरिवेशन 2x dx 1 dt, but we have x dx, so x dx equal to 1/2 dt. तो मीनिंग क्या हुआ? जो एक बात समझो यहां पर, this question is a cos² x, तो obviously here putting the formula, then integration is in x form because given angle x, तो answer is in x form, right? Okay. Now 0 to pi/2, बाद में हम क्या बोलते हैं कि putting x equal to pi/2, upper minus lower, तो putting x equal to pi/2, then lower limit x equal to 0, it means x equal to limit ना, तो this is the limit is for the x. तो हम तो यहां पर क्या कर रहे हैं, we are converting this x term to t term, and this is the limit is for the x, limit is for the x, and we are converting x into t. तो लिमिट का क्या हुआ, हम ये लिमिट तो x के लिए, x तो हमने t में कन्वर्ट कर दिया. तो मीनिंग इज, जब भी आप कोई भी सपोज करो कि x² इक्वल टू t sin थीटा cos थीटा, कोई भी सपोज करो, मस्ट कन्वर्ट योर लिमिट, x लिमिट इनटू t लिमिट. सेम थिंग लाइक जो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, चलो पुटिंग और डेटा, तो x dx मीन्स 1/2 dt, and x² plus 1, तो x² is a t, so t plus 1. So this question is in t form, so can we write here 2 to 3? No. Reason? So 2 and 3, these two limits, this limit is for the x, and यहाँ पर तो totally term t form है, so it means we need the value of t from x. बराबर? Find the value of t from x. So we cannot use here 2 and 3. So method is x equal to 2, then what is t, and x equal to 3, then what is t. तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम x, कहीं पर भी ये जो पार्ट है, कहीं पर भी ऐसा इक्वेशन है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड t, रेडी? यस, यहां पर जो भी आप सपोज करोगे, लाइक यहां पर हमने क्या किया, x² इक्वल टू t, तो हियर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड गेटिंग t. चलो, तो पुट हियर x इक्वल टू 2, तो 2² 4, तो t इक्वल टू 4, एंड पुटिंग 3, तो 3² 9. तो 2 इक्वल टू, नाउ t is 4 and x इक्वल टू 3, then t is 9. तो लोअर लिमिट इक्वल टू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट. इट मींस वेयर इज द 2 डाउन साइड, तो पुटिंग 2, तो आंसर 4, एंड पुटिंग 3 अप साइड, तो आंसर 9. अपने आप नहीं लिखना है कि चलो लोअर टू अपर, ऐसे नहीं, जो भी आपको आंसर मिले वही लिखना है कि डाउन साइड 2, तो 2 इक्वल टू आंसर 4, तो डाउन साइड 4, अप साइड 3, तो 3 इक्वल टू आंसर 9, तो अप साइड 9. चलो, नाउ 1/2 कॉमन, and 1 upon t plus 1 integration log mod t plus 1, here bracket, and 4 to 9. Now indefinite integration में हम क्या करते थे, indefinite integration में after completing our integration then put the value of t, putting the value of t equal to x² sin theta cos theta tan theta, कोई भी वैल्यू. यहां पर आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपने वैल्यू तो कन्वर्ट कर दी, x equal to 2 and 3, तो t equal to 4 and 9, तो 4 and 9 are the values of t, so no need to put the value of t here, t as it is, and now directly put the value of t, upper minus lower. तो डिफाइनेट इंटीग्रेशन में एक याद रखना है क्या, एट लास्ट डोंट पुट द वैल्यू ऑफ t, डायरेक्टली पुट द लिमिट upper minus lower. So 1/2 as it is, and in the bracket process is upper minus lower, तो putting 9, तो 9 plus 1 10, तो log 10 minus lower limit is 4 plus 1 5, so 1/2, and log and subtraction तो division, log 10/5, तो 1/2 log 2, ये भी आंसर log root 2 ही हुआ, ट्राई करना, आंसर इज log root 2. बराबर? चलो नेक्स्ट नंबर 14, 0 to 1, 2x plus 3 upon 5x square plus 1.
तो x स्क्वायर एंड x कॉम्बिनेशन राइट, डेरिवेशन ऑफ x स्क्वायर इज x, पर बाद में ये +3 नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे सेपरेट. ओके, सो 0 to 1 2x upon 5x square plus 1 dx plus 0 to 1 3 upon 5x square plus 1 dx equal to I1 plus I2. Now solving I1. I1 is 0 to 1 2x upon 5x square plus 1 dx. Taking x square equal to t, तो x square derivation is 2x. Okay, है ना. कोएफिशिएंट ऑफ x square is not 1, तो हम 5 कॉमन नहीं लेंगे. तो फंक्शन डेरिवेशन में कॉमन नहीं लेना है, जब भी फॉर्मूला है तो कॉमन लेना है कि दिस 1 अपॉन एन फॉर्मूला, तो 5 कॉमन इन पुटिंग द फॉर्मूला. ओके, यहाँ पर कॉमन नहीं, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो टेकिंग x square equal to t. X square equal to t. So 2x dx equal to 1 and dt. We have 2x dx. Now जब भी आप सपोज करोगे तो क्या करोगे, चेंज द लिमिट. ओके, चलो x equal to 0 and x equal to 1. Then finding the value of t. X equal to 0, so t also 0, and x equal to 1, so t also 1. So I1 0 to 1, 0 is 0 and 1 is 1. 2x dx equal to 1 dt, and 5x square means t plus 1. तो इंटीग्रेशन इजी. 7.1 में 1 और 2 में ऐसे इंटीग्रेशन थे. 1 upon 5 t power 1 whole power 1, तो log mod denominator. So log mod denominator is 5t plus 1, and do not forget the coefficient of x downside. But here t, so coefficient of t is a 5, and limit 0 to 1. 1 by 5 outside, and in the bracket putting the upper minus lower. Upper limit is 1, so t equal to 1, so 5 plus 1 6 minus now 0, so 5 into 0 0, 0 plus 1 is a 1, so log 1, and we know that log 1 is a 0. The answer of I1 is 1 by 5 log 6. Now solving the I2. Integration 0 to 1 3 upon 5x square plus 1 dx. Okay, तो 3 कॉमन, तो क्या होगा 1 अपॉन एन एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 1, तो फॉर्मूला हुई ना. बट अगर आप फॉर्मूला है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होना चाहिए. तो टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 3 तो आउटसाइड लेना ही पड़ेगा, बट 5 आल्सो कॉमन फ्रॉम द डाउन साइड. तो डाउन साइड अपसाइड 1 एंड डाउन साइड x स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 dx. तो दिस वन इज ए फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 बाई 2a log mod नहीं, log mod नहीं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a. तो 1 बाई a, व्हाट इज a? a इज ए 1 बाई 5 और 1 बाई रूट 5, 1 बाई रूट 5. तो 1 अपॉन a मीन्स अपॉन 1 बाई रूट 5 tan इनवर्स x by a, x by 1 by root 5, and here putting the limit 0 to 1. Okay, so I2 root 5 upside and root 5 upon 5. This root 5 upside, root 5 upon 5 is a downside root 5, so 3 by root 5.
bracket tan inverse root 5 upside to root 5 into x and limit 0 to 1 3 by root 5 and in the bracket putting the upper minus lower. Upper limit is 1, so tan inverse root 5 and lower limit is 0, so tan inverse 0. Tan inverse 0 means 0. So I2 3 by root 5 tan inverse root 5. Okay? Either write the 0 or tan inverse 0. Tan inverse 0, 0 you want. So this is the answer of I2. Now putting the value of I1 and I2 in equation number 1. So what is the equation 1? I1 plus I2. Our answer of I1 1 by 5 log 6 plus I2 3 by root 5 tan inverse root 5. And this is the final answer. Okay. So next sum we will see in next lecture. Okay.